So, hey guys, welcome back to day 3 of my coding journey. So, I'm learning Java from scratch, and whatever I will understand, I will try to explain it in simple way. So, today I will try to break down that whole basic structure of Java program, including public, static, void, main, and everything. Java always starts with class. क्लास का एक्चुअल मीनिंग होता है कंटेनर. इट्स लाइक कंटेनर ऑफ प्रोग्राम. व्हेन आई राइट क्लास मेन, आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग अ कंटेनर and naming it main. So everything, whatever the program does, it will happens inside the class. After that, we will add curly braces. That open curly braces means the beginning of class, and that close curly braces means the ending of class. So whatever I write there, it belongs to that class. And inside the class, we write public, static, void, string, array, urges. It look intense, but let's break it down. So ये start होता है public से. मेन मेथड को हमेशा पब्लिक इसलिए रखा जाता है टू एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर. सो इसलिए ये नेसेसरी है कि हम उसे पब्लिक ही रखें. एंड नेक्स्ट, स्टैटिक. Why we use static? Because static means we can run this program without creating the object. जैसा कि हम क्लास बनाए हैं, क्लास नेम क्रिएट किए हैं, सो क्लास के साथ हमें ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ता है. बट हियर वी आर यूजिंग स्टैटिक. So what it actually means that Java can start its program without creating anything. It just runs. Then void means this method do not return anything. It will not return any value. It just simply run the code and then finishes. हाँ, and उसके बाद आता है main. Main is actually the method name, and it's the official starting point of the program. आफ्टर दैट मेन की भी बॉडी होती है, उसमें भी कर्ली ब्रेसेस, ओपन कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज कर्ली ब्रेसेस होते हैं. हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है मेन के बाद, वी राइट स्ट्रिंग एरे अर्जेस. इट मीन्स कि इट कैन एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट्स. नेक्स्ट, इनसाइड द मेन मेथड वी राइट द स्टेटमेंट system dot out print ln, then inside that bracket we write hello world and all. सो प्रिंट का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि हम कोई भी वैल्यू या फिर कुछ भी स्टेटमेंट हमें प्रिंट करवाना है तो हम एक स्क्रीन पे उसे रिफ्लेक्ट कर पाएँ, उसे शो कर पाएँ. दैट्स वाई वी यूज़ प्रिंट. सो ये रहा पूरा स्ट्रक्चर. इसे मैंने क्लियरली ट्राई तो किया है कि मैं क्लियरली डिफाइन कर पाऊँ. सो द होल स्ट्रक्चर इज सिंपल once you break it down. That class, braces, main method, print statements and everything. So I'm learning all this every day and explaining it so that ये मुझे खुद भी clearly समझ में आए. So that's it. If you are watching this, we are on the same journey. So see you in the day 4. राधे राधे.